Flood situation which is improving in Uttar Pradesh and Bihar, with the water level in the major rivers either stable or receding. While the problem now facing the state governments would be the rehabilitation of the people displaced by the floods and hence living thereafter in the relief camps. 10 more NDRF teams have been deployed in the two states for relief and rescue operations. Prime Minister Narendra Modi himself has assured people of all the help possible. The Prime Minister's office is closely monitoring the situation and is in constant touch with the local authorities. The NDRF teams are present at Varanasi for rescue and relief work. Over 40 people have lost their lives in the state and 16 lakh have been affected. In Allahabad and Ballia, all schools have been shut for the next few days. In Bihar, at least 22 people have lost their lives, while about 24 lakh have been affected due to floods. Many areas, especially the riverine belt of 12 districts, are badly reeling under the water in the state. In West Bengal, incessant rainfall along with the release of water through the DVC dams and barrages has turned the situation grim in southern region, leaving thousands stranded and causing severe damage to property. Major areas in Havda, West Midnapur, Bardhaman and Bankura got submerged since the DVC released excessive water. And let's now go across to our correspondents to get the ground situation. Joining us at the moment are our correspondent from Allahabad, Sunil Shukla, is joining us. Joining us from Patna is our correspondent Sanjay Kumar. He's present there at a relief camp. And from Bhopal, our correspondent Deepak Jain is joining us. If I can come to you first, Sunil, good morning. Just give us a sense of the situation there on the ground, because what we're learning is that the water is either stable, has reached that stable level, or has begun to recede. But really the focus and the challenge now remains the rehabilitation of those displaced. Just give us a sense of the situation on the ground for the moment. In Uttar Pradesh, about 26 districts are affected and lakhs of people are suffering from the flood. And 200 relief camps have been set up across the state. But really you are very much correct. People are forced to live in relief camp are facing a lot of problems. There is no electricity, no drinking water. Children and old age people are suffering. Reports have been received from different districts that pregnant women are forced to make delivery in the boats crossing the rivers. Relief materials are not being provided to the affected people. And when you are correct that most of the major rivers are receding, are stable, but in Ballia, Allahabad, Chitrapur, Gazipur, Varanasi, major rivers are flowing 1 to 3 meters above to the danger mark, and new area, it has covered new areas. Right now I am standing at on the bank of Jamuna. Just behind me there is a railway bridge. Jamuna water level is only 5 feet below from the bridge level, and it has affected the speed of the trains, and only 20 to 25 kilometers per hour speed is allowed there. It has affected the rail transport, road transport. Schools in most of the districts are closed as relief centers has been opened there. So people who are affected with the flood are facing a lot of problems, and at the relief camps are facing drastic issues. All right, Sunil Shukla, thank you so much for joining us with those details. We'll go across to Sanjay Kumar, who is joining us from a relief camp in Patna. Sanjay, 24 lakh people have been affected in the state. You're there at a relief camp. Give us the ground situation from there, because now the main concern of the authorities there would be to ensure that no epidemic, no outbreak of an epidemic occurs. Added to that, also the rehabilitation of the persons affected, of the people affected, is of more concern for the authorities there. Give us more. सवाल है, अभी भी लोग जो है शिविरों में हैं, और कुछ लोग तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी बाढ़ से घिरे हुए हैं। लेकिन जिन शिविरों में लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी कि जैसे ही पानी कम हो जाएगा हम अपने घर पे चले जाएंगे, तुरंत चले जाएंगे। वे सरकार का नियुक्ति का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि उनके जो घर बाढ़ में बह गए हैं, उन्हें वो बना देंगे, उन्हें ये आर्थिक मदद देंगे।
लेकिन ये चाहते हैं कि जैसे ही बाढ़ का पानी खत्म होगा वे सीधे अपने घर जाएंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा पशुधन जो पशुओं को लेकर यहाँ पर आए हैं उनकी पूरी तरह से देखभाल नहीं हो पा रही है। वहीं पर दूसरी ओर तमाम ज़िलों में जहाँ बाढ़ प्रभावित शिविर में लोग हैं और घिरे हुए लोग, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है सरकार के खिलाफ में। बख्तियारपुर में बाढ़ राहत पीड़ितों को राहत सामग्री नहीं दी गई, उसे लेकर प्रदर्शन किया गया। एक आक्रोश भी है, उन्हें पूरी तरह से राहत सरकार नहीं दे पा रही है। वहीं पर कुछ राहत शिविरों में सरकार राहत शिविर दे रही है। इस बीच आपदा प्रबंधन के सचिव जो है प्रधान सचिव व्यास जी आज विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं ताकि इन्हें पुनर्वास की व्यवस्था इनकी की जाए। जी। All right, Sanjay, thanks very much for sharing those inputs. Let's also go across to our correspondent present in Bhopal. Deepak is joining us at the moment. Deepak, good morning. Give us a sense of the situation there on the ground. The State Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has been visiting the flood-affected areas and assuring people of all the possible help, and we believe the water there in the region has begun to recede. बिल्कुल पिछले 24 घंटों की बात करी जाए प्रदेश में तो कहीं भी ऐसी भारी बारिश नहीं हुई है और अगले 24 घंटों के लिए भी किसी भी तरीके का अलर्ट जारी नहीं किया गया। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी हल्की फुल्की बौछारों के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में यहां की जो सिचुएशन है वो सामान्य होती जा रही है। रीवा, सतना और पन्ना जहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी वहाँ पर भी पानी जो है अब कम हो रहा है। ऐसे में एक सबसे बड़ी बात जो है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए रखना है, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना है, उसके लिए प्रदेश सरकार काफ़ी ज़्यादा सजग नज़र आ रही है। साथ ही रिहैबिलिटेशन की बात करी जाए तो ऐसे लोग जो राहत शिविरों में हैं उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही जहां पर पानी कम हुआ है और जो लोग अपने घरों की ओर जा सकते हैं उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप जाएं, लेकिन सेफ्टी वहां पर रखी जाए। तो ऐसे में प्रदेश सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा सजग है। वहीं बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों का दौरा किया था, बाढ़ प्रभावित जो थे वहाँ लोगों से वो मिले, उन्होंने सांत्वना दी। साथ ही कहा कि किसी भी तरीके की अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो प्रदेश सरकार आपके साथ है। राहत राशि की घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा जो जिनों के घरों को क्षति हुई है उनका सर्वे किया जा रहा है। तो प्रदेश सरकार काफी ज्यादा सजग है। वहीं बात करें जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं एंटोनी डीसा, कल उन्होंने प्रगति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब प्रधानमंत्री जी से बात करी थी तो उन्हें भी सभी स्थितियों से अवगत कराया है। प्रदेश के 31 जिले जहां पर बारिश ज्यादा हुई है, मतलब 20% ज्यादा जो सामान्य से ज्यादा बारिश है वो हो चुकी है, उस बारे में उन्हें बताया है। राहत बचाव कार्य कैसे चल रहे हैं, सेना की मदद, NDRF SDRF की मदद किस तरीके से ली गई है, इस बारे में भी उन्हें जानकारी दी है। All right, Deepak Jain, thanks very much for joining us at the moment and sharing all those details. I would also like to thank our other correspondents who joined us at the moment, Sunil Shukla, Deepak Jain and Sanjay Kumar. Thanks to all of you very much for joining us at the moment. So the situation there in Allahabad, in Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh, different from one state to another. As far as Uttar Pradesh is concerned, a correspondent was telling us that there is no power, no water, and relief material is not reaching to people adequately in adequate manner. Also, road and rail traffic continues to be affected there in the state of Uttar Pradesh. Yes, our correspondent from Bihar tells us that people there are waiting for the time when the water level could recede and they could return back to their homes and they could reconstruct their homes. Also, our correspondent joining us from Bhopal tells us that the water level in Rives, Satna and Panna have begun to recede, and how the state government there has taken special measures to ensure health facilities reach the people there in the relief camps. We'll keep you updated with the current situation.